Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Industrial output in April increases 7.1% as against 1.9% in March this year. Domestic stock indices decline more than 1.5%. Sensex closes near the 54,300 mark. Nifty finishes near 16,200 level. And rupee depreciates to 77 rupees and 84 paise against the US dollar. औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष अप्रैल में 7.1% की दर से बढ़ा। मार्च में यह आंकड़ा 1.9% दर्ज हुआ था। घरेलू बाजार सूचकांक 1.5% से अधिक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 54,300 और निफ्टी 16,200 के करीब हुए बंद और रुपया डॉलर के मुकाबले मंदी दर्ज करता हुआ 77 रुपये 84 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। In our top story, the country's factory output IIP index of industrial production accelerated 7.1% in April as against 1.9% in March 2022. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, the growth in IIP data during April is led by all the sectors. The manufacturing sector recorded a growth of 6.3% in April. The mining sector rose by 7.8% and the electricity sector climbed 11.8%. IIP is an index which details out the growth of various sectors in the economy. The 8 core industries comprise more than 40% of the weight of items included in the IIP. These are electricity, steel, refinery products, crude oil, coal, cement, natural gas and fertilizers. Once again, let's introduce our market expert, Puneet Jain. Puneet, a warm welcome to you on the program. Thank you, Arjun. Puneet, how encouraged are you by the IIP data for the month of April? Of course, there is the other months to follow as well. But for the month of April, what has led to the manufacturing sector recording a growth of 6.3%? So clearly, this data is quite encouraging, as you said. And despite the fact that, of course, last year in April, we had the second wave of corona. So the base was pretty low. However, I think even then, we must recognize the fact that Indian economy continues to be on a robust growth path, despite many challenges. And I think the very fact that manufacturing sector has shown the lead in this growth is very promising, because there has been a lot of emphasis by the government on domestic manufacturing, on Atmanirbhar Bharat. We are looking at defense growing. So if you look at the sub-sectors of this manufacturing, you will find that a lot of this positive impetus for growth is coming from manufacturing capital goods. It is coming from manufacturing white goods, telephones, handsets. So I think across the spectrum, the growth has been quite robust. And if we continue this momentum, I'm sure we will, the overall GDP growth will be quite good this year. सो पुनीत जी, आप कहेंगे कि नए फिस्कल ईयर की शुरुआत है अप्रैल में, सो एक अच्छी शुरुआत हुई है और कैपिटल गुड्स 14.7% बढ़ना, क्या ये दर्शा रहा है कि इन्वेस्टमेंट में भी पिकअप है? बिल्कुल सोनू, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो कैपिटल गुड्स की जो ग्रोथ डेटा है वो सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में हम और ज्यादा ग्रोथ देखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं कंजम्पशन में तो ग्रोथ आती है लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ नहीं होती, तो फ्यूचर जो नंबर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। पर फॉर्चुनेटली ये हम देख रहे हैं कैपिटल गुड्स में, यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ है। साथ में जो कोर इंडस्ट्रीज हैं जिसकी अर्जुन ने भी जिक्र किया था, वहां भी हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो एडवांस इंडिकेटर्स हैं या जो फोरकास्ट हम कर सकते हैं वो ये है कि जो जीडीपी ग्रोथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल 7.5%, वो शायद हम आराम से अचीव कर पाएंगे। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो अप्रैल का हमारे पास जीएसटी डेटा आया था वो ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड कलेक्शन थी। तो वो भी एक दर्शाता था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अभी अच्छी तरह से भी ग्रो कर रहा है। Puneet, today we saw the Bajaj, in fact,
establishing its EV plant for two-wheelers in Pune, which promises 800 units of production per day at least. How do you see this type of capex expenditure leading to greater employment for skilled labor? So, I think India needs to transition to new technologies as soon as possible, not only in terms of providing employment or generating investments, but also technologies like EV, which will reduce our dependence on crude oil. Because if I look at India's growth over the last 25, 30 years since liberalization began, I think one thing which we have always suffered from is this huge dependence on crude oil and fossil fuels for growth. So if we really want to break away from that bind, I think it is important that we invest in new technology. So while I look at Bajaj Auto's new plant for EVs, I think it really is extremely promising. Of course, along with the renewable energy plants that we are getting being set up in India, definitely I think it is very, very promising for India. पुनीत जी, कहाँ तक आप सरकार की जो एक कहें कि टारगेटेड अप्रोच है उसको कहाँ तक इसके लिए आप इस इकोनॉमिक रिबाउंड जो हम देख रहे हैं उसके लिए आप कहेंगे उसका योगदान है? एक तरफ जहाँ रिफॉर्म्स में PLI स्कीम्स, इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खासतौर से इम्पेटस देने के पहल की गई है, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है 7.5 लाख करोड़ का बजटेड, उसको फ्रंट लोड करने की बात की गई है कि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट सितंबर तक 60% एटलीस्ट जो है उसका एक्सपेंडिचर वो व्यय कर लें ताकि उतनी ही जॉब्स क्रिएट हो। आपको लगता है ये सारे जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली ये भी रिजल्ट्स दिखा रहे हैं? बिल्कुल सोनू, आपका एक्चुअली क्वेश्चन कई लेवल्स पर इस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है, हम जानते हैं PLI हमने कई बार डिस्कस किया है, और जो और भी रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, चाहे डिजिटल भारत की बात करें या फाइनेंशियल सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात करें, वो सब उन सबका एक ही गोल है, वो है कि हम जो बिजनेस वाइज है वो हम कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बने। आपने जिक्र किया जो भारत की सरकार अभी फ्रंट लोड कर रही है इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ी स्लो डाउन आ सकता है, विच इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट डिजाइंड राइट नाउ। लेकिन उसको जो काउंटर बैलेंस कर सकती है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज होते हैं वो इस पर डिपेंड नहीं करते इन्फ्लेशन के ऊपर। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कैन फ्रंट लोड इट एक्सपेंडिचर। उन्होंने कोशिश तो की है कि इसको हम फ्रंट लोड करें, 60% एक्सपेंडिचर इसी फर्स्ट हाफ में करें। नॉर्मली हम जानते हैं कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर इज यूजुअली द मोर बिजी सीजन, जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट को काउंटर बैलेंस कर रही है। मुझे लगता है काफी एम्बिशियस है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है और गवर्नमेंट बोरोइंग्स को चैलेंज होगा। No, it's a nice effort. I don't know how far it will be successful. Well, Puneet, from front end, let's look at the back end investment. Mining sector rose by 7.8%. How do you see the quota restrictions on exports leading to a decrease in production volumes by companies engaged specifically in mining, and that too of commodities? How do you see the subsequent data being affected as a result? So mining, of course, has been a very interesting field because there are two things happening. One is that there is a regulatory regime which used to restrict production, particularly in coal, because large part of this mining activity that you see is actually coal mining, which is being done by public sector companies for commercial purposes and by private sector companies which are doing it for captive purposes. But government has recently released private sector companies from the obligation of doing it only for captive consumption. They can now mine coal for commercial purposes. I think that is, but it will take some time. See, when you make these changes, they come into effect maybe 6 months or 1 year from the time that the implementation begins. So I think going forward, we are going to see a very big investment jump in mining in India, particularly in coal mining. And that will, of course, then propel investment in across infrastructure space. But I think mining has been one of the areas where government has focused on reforms, on liberalizing policy, and pushing investments in production.
एंड ऑल्दो आप ऑलरेडी जीडीपी ग्रोथ का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये मोमेंटम जो आया है पहले महीने में फिस्कल ईयर के, अगर ये मोमेंटम मेंटेन रहता है आईआईपी का, तो जीडीपी ग्रोथ पर भी वो रिफ्लेक्ट होगा जो आरबीआई ने 7.2 रखा है, या कई एजेंसीज फिच ने भी रिवाइज करके हालांकि डाउनवर्ड रिवीजन किया है, उन्होंने लेटेस्ट दिया है 7.5। तो शायद हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो ज्यादा कंजर्वेटिव है। आपको लगता है कि ये टारगेट्स मीट होते नजर आ रहे हैं? देखिए, नॉर्मल कोर्स में मैं कहता कि आराम से हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विश्व का जो पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो देखें तो काफी चैलेंजिंग है। और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने दो है। एक इन्फ्लेशन है जो बहुत ऊंचा है और उसकी वजह से कंजम्पशन हिट हो रही है। दूसरा जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स है वो उसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट्स और जो सेंटिमेंट है, बिजनेस सेंटिमेंट है, वो हिट हो रहा है। प्लस जो सप्लाई चेन्स को लेकर और रशिया की जो वॉर है यूक्रेन में, उसको लेकर जो ग्लोबल ग्रोथ अफेक्टेड है, वो हम डेटा हमारे सामने है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जो भारत के एक्सपोर्ट्स हालांकि हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से बढ़े हैं, लेकिन हमारा इकोनॉमिक जो इम्पोर्ट्स है उसमें भी काफी गति आई है, पर्टिकुलरली चाइना से। आपको हैरानी होगी कि जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास लास्ट ईयर का आया है, हालांकि अमेरिका से हमारा ट्रेड बहुत बड़ा है और अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस है, करीब $70 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस है। अमेरिका के साथ $120 बिलियन का हमारा ट्रेड रहा है यूएस से। उतना ही करीब चाइना से है $120 बिलियन का, लेकिन चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट है और $70 बिलियन का है, $72 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कुछ एरियाज हैं जहां पर हमें और ध्यान देना होगा, वहां पर हमें इंपोर्ट कम करना होगा, और जो हमारे फेवरेबल जहां से अमेरिका से हमें बहुत ट्रेड सरप्लस है, वहां शायद हमें और ध्यान देना होगा। तो ये सब चीजें जीडीपी ग्रोथ को भी काफी अफेक्ट करने वाली हैं, और मुझे लगता है कि इट विल बी अ चैलेंज गोइंग फॉरवर्ड, बट इट इज डूएबल डेफिनेटली। Puneet, let's talk about consumption, especially of electricity, and it's linked to coal mining for the thermal power plants. So how do you see the two balance each other out, while at the same time ensuring that the 8 core industries are supplied with? So, electricity generation has been a challenge not only for India. In fact, there is an energy crisis across the world. India has been able to do pretty well. We have not faced very severe shortage of electricity so far, while there is a challenge. And government acted in very good faith, and I think with a lot of speed when they allowed private sector companies, power generation companies, to import coal. We have had a policy for many years for discouraging coal imports, and we were trying to push domestic imports. But realizing that there is a shortage in the short term, government has allowed duty-free import of coal for power generation. I think it is going to play a major role going forward in balancing our power needs. Of course, it's a policy which will need to be relooked at next year when things return to normal. But in short term, we are going to import a lot of coal and rely on thermal power to meet the needs. चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले शेयर बाजार के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक शेयर बाजारों में मंदी के अनुरूप दोनों सूचकांक गिरावट में रहे। सेंसेक्स 54,300 और निफ्टी 16,200 के स्तरों के करीब बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.84% की मंदी से 1,017 अंक कम होकर 54,303 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.68% की मंदी से 276 अंक टूटकर 16,202 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां गिरावट तुलनात्मक रूप से कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.64% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई। Domestic equity markets today suffered losses of more than 1.5%. Both stock indices declined in sync with losses in the global share markets. Sensex closed near 54,300 points, while Nifty settled near 16,200 level. Sensex stumbled by 1,017 points, 1.84%, to finish at 54,303, while Nifty fell 276 points, 1.68%, to end at 16,202. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined by 0.64%, and the small-cap index ended 0.70% down. In the Sensex pack, 8 companies logged gains, while 22 companies declined.
Asian Paints was the top gainer as it rose at 0.8%, followed by Dr. Reddy's Laboratories, which gained 0.6%. Ultratech Cement surged by 0.5% and Hindustan Unilever ended 0.1% up. On the other hand, Kotak Bank lost the most as it slipped 4%. Bajaj Finance declined at 3.9%. HDFC plunged 3.8% and Reliance fell by 3%. In sectoral indices at the BSE, 18 out of the 19 sectors logged losses. Only the telecom sector added by going up by 0.1%. On the other side, IT, oil and gas sectors both fell by 3% each. Finance and energy, both indices slipped 2% each, and the tech index plunged 1.9%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,207 companies gained, while 2,046 fell. Shares of 132 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की गिरावट से अब तक के अपने रिकॉर्ड न्यूनतम समापन स्तर 77 रुपए 84 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.42% की बढ़त से 103.66 पर था। पुनीत जी, हमने देखा है कि बाजार में खासी गिरावट आई है, 1000 अंक से ज्यादा टूटा है सेंसेक्स, और जैसा कि हमने पढ़ा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगभग गिरावट रही। जिस डेटा का इंतजार था वो भी आ चुका है। यूएस इन्फ्लेशन मई का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8.6% आया है। कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन थी 8.3% की। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को, और आपको क्या लगता है कि अगले सप्ताह बाजारों पर इसका क्या असर होगा? सुनो, मुझे लगता है जो यूएस डेटा आया इन्फ्लेशन का 8.6%, उसका नेगेटिव असर रहेगा बाजारों पर, क्योंकि ये बात साफ है कि अभी यूएस फेडरल रिजर्व को और इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, और मार्केट के लिए काफी सेंसिटिव पॉइंट है, बिकॉज जब तक ये इन्फ्लेशन का डेटा उनका सॉफ्ट आना शुरू नहीं होगा तब तक यूएस के फेड के पास काफी कम चॉइसेस हैं. दे विल हैव टू कीप रेजिंग रेट्स एंड दे विल हैव टू कीप टाइटनिंग मनी सप्लाई. इसका असर हम देख रहे हैं कि जो एफआईआईज हैं वो काफी बड़े पैमाने पे सेलिंग कर रही है, भारत में भी और दूसरे बाजारों में भी. आज भी भारत में करीब 4000 करोड़ का शेयर्स उन्होंने बेचे हैं, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने करीब 2000 करोड़ का स्टॉक्स खरीदे. लेकिन एफआईआई सेलिंग जो है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है. यदि आप देखें तो जो हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी की हम बात करें या कोटक, यहाँ पर एफआईआई होल्डिंग बहुत ज्यादा है इस तरह के शेयर्स में, और वहां पर हम सेलिंग देख रहे हैं. इनफैक्ट एफआईआई डेटा को देखें तो जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, उनकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं, उसमें करीब 20 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स है एफआईआई की, और ये सारे बहुत हैवी वेटेड इंडेक्स स्टॉक्स हैं. तो यदि एफआईआई सेलिंग इनमें बरकरार रहती है, चालू रहती है, तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट पे प्रेशर बना रहेगा. जब क्या आप देख रहे हैं कि ज्यादातर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का शुरू है, वहां प्रेशर नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हम काफी चले हैं एफआईआई के द्वारा, और वो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं. We'll be heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से. लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान. अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग. डायल कीजिए 870-001-4242. नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242. Welcome back to Market Mantra. We're discussing about market performance with our expert, Shri Puneet Jain. Puneet, once again, a warm welcome to you on the program. We're discussing earlier about the banking Nifty's weightage on the Sensex and Nifty key stocks, which went down by as much as 4%, like HDFC, Bajaj Finance, Kotak Bank. Nifty Bank fell by 601 points. Repo rate right now is 4.9%. It has had an effect on the retail rate, on the lending rate for consumers. Do you expect the central bank to once again increase the repo rate, and thereby again impacting the stock market valuation of these banking stocks? Yes, Arjun. It's almost difficult to say how much RBI will raise rates without hurting economic growth and becoming concerned about economic growth. But I think RBI will continue with the rate increases for at least 2 or 3 meetings.
Now, that may be overall about 100 basis points, because we might see another 50 basis points in the next meeting and then 25 basis points. They'll slow down a little bit towards the end of the year. But I think for the time being, the choices are very limited before RBI and other central banks in the world. I think all the central banks in the world, including the European Central Bank and most importantly, the Bank of Japan, because they have been holding off. They continue to have an easy money policy. But the value of yen has crashed vis-a-vis the US dollar and to a historic low. So I think Bank of Japan will also may have to act on interest rates. All this together will create short-term turbulence for the markets, in my assessment. तो आप जो टर्बुलेंस की बात कर रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं थम पाएगी जो स्ट्रांग मैक्रो नंबर्स आ रहे हैं, या जैसा आपने अभी बताया कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है भारतीय बाजारों में, इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज जो है वो मई में अभी फिगर्स आए हैं कि 15वां महीना है जब वो बढ़े हैं, 9th कंसेक्टिव मंथ है जहां एसआईपी इनफ्लोज 10,000 करोड़ को क्रॉस कर गए हैं। आपको लगता है कि ये जो कारक है ये इंश्योर करेंगे कि रेंज बाउंड रहे बाजार और बहुत ज्यादा कहें कि तीव्र गिरावट ना आए? सोनू, ये बहुत ही रिमार्केबल एक ट्रेंड हमने देखा है भारत में। जब भी पास्ट में जब एफआईआई की सेलिंग होती थी तो बाजार उसको बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और काफी शार्प फॉल हम देखते थे। अब की बार हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही स्ट्रांग रहा है और मई के महीने का जो डेटा आया उसमें दिखाया कि रिकॉर्ड 18,000 करोड़ रुपए का टोटल म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो है, 13,000 करोड़ से ज्यादा एसआईपी में इनफ्लोज है, जो कि स्टेबल इनफ्लो है। तो मुझे लगता है कि जो एफआईआई की सेलिंग रही है और जो चल रही है उसको काफी हद तक एब्जॉर्ब किया है और ये एक मुझे लगता है लॉन्ग टर्म तेजी भारतीय बाजारों के लिए उसका एक कारण है, क्योंकि जब एफआईआई री इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे एंड माय एक्सपेक्टेशन इज आफ्टर सितंबर अक्टूबर शायद एफआईआई भारत की बाजारों में लौटेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव उसमें मोमेंटम होगा, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आराम से सेलिंग के लिए नहीं आएंगे एंड मुझे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव लगता है। शॉर्ट टर्म डेफिनेटली एफआईआई सेलिंग इज अ कंसर्न। Puneet, hedge funds and other foreign institutional investors like Jefferies have announced that they will re-enter the market when the Nifty hits 14,000 or 14,400 level as against 16,200 that it is right now. How concerned should retail investor be at this stage where the market may go down by another at least 15 to 1,600 points on the Nifty and maybe more on the Sensex? So, Arjun, a lot of people have expressed the belief that markets can go down by another 10% in the medium term. I would not be too concerned. See, first of all, we have seen some correction, but I think another 10% wouldn't break this market. Secondly, I think that will be a great opportunity for investors to enter. And those who have an SIP, a systematic investment plan, I think they should just continue with it. Or if they can increase the amount, it will be very welcome. But because I think that after this correction, when the Indian markets turn around, because fundamentals are pretty good, whenever we see a turnaround 2 months from now or 6 months from now, I think after that we're going to see a big bull run. That's my personal belief. But I think Indian markets are in for a major upturn sometime later this year. And that upturn could really take us into new record highs. So I think investors should stay the course and should not be too worried by 5 or 10% fall in the markets from here. And Puneet जी, आपका संक्षिप्त सी टिप्पणी से पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर बढ़ें, आज ऑल टाइम क्लोजिंग लो रहा है, रुपए का 77 रुपीज 84 पैसे के लेवल पे आ गया है डॉलर के अगेंस्ट। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसी डेवलपमेंट है? देखिए, रुपये का जो फॉल है ये मैटर ऑफ कंसर्न है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी ऊंचा है और इसकी वजह से रुपए में एक इनहेरेंट वीकनेस है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि विद $600 बिलियन रिजर्व कोई चिंता का विषय नहीं है। ये एक चैलेंज जरूर है, आरबीआई के लिए भी है, इकोनॉमिक मैनेजर्स के लिए भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई क्राइसिस भारत में हो सकता है। डेफिनेटली रुपए के नीचे आने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि हमारी जो चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती है और एक्सपोर्ट्स थोड़ा बेनिफिट करते हैं, लेकिन ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर आता है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग मैटर ऑफ कंसर्न, है चैलेंज फॉर आरबीआई। दे नीड अ ऑर्डरली वैल्यूएशन ऑफ करेंसी vis-a-vis डॉलर, बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू लीड टू अ क्राइसिस इन द शॉर्ट टर्म।
आइए अब चलते हैं वैश्विक शेयर बाजारों की ओर। यहां पर चौतरफा गिरावट के अनुरूप एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। ब्याज दर में बढ़त की संभावना पर यूरोपीय केंद्रीय बैंक के वक्तव्य और आज जारी होने वाले अमेरिका के मुद्रास्फीति से जुड़े आंकड़ों पर चिंताओं के बीच वैश्विक वृद्धि से जुड़ी आशंकाओं को बढ़ावा मिला। हालांकि चीन में नीतियों में ढील की आशाओं के बल पर चीन के शेयर बाजार में आज तेजी दर्ज हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 1.5% लुढ़क गया और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.1% की गिरावट रही। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.9% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% के नुकसान में रहे। हालांकि चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 1.4% का उछाल दर्ज हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी अंतर दिवसीय कारोबार में मंदी का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी और जर्मनी का डैक्स दोनों 1.2% की गिरावट पर थे। फ्रांस का कैक 1.5% के नुकसान पर था। Moving on to the US stock market, US stocks sold off sharply yesterday as investor anxiety heightened ahead of inflation data to be released today that is expected to show consumer prices remain elevated in May. The Dow Jones Industrial Average Index ended 1.9%, S&P 500 tumbled 2.4%, and the Nasdaq Composite Index plunged 2.8%. Puneet, we've already discussed that inflation for the month of May is 8.6% in the US. It's the highest since 1981. To what extent do you see this affecting profitability of American companies on these stock indices? And how do you see the markets reopen when trading starts and its impact directly on our stock indices as well starting Monday? So clearly this data is not happy news for markets. I think markets will react negatively to it. The US Dow Jones futures I'm looking at right now are already down by more than 400%. So 400 points. So my own sense is that markets will take it with a pinch of salt. They're going to react negatively to this. But I think it was expected. So it's to some extent it is unhappy news, but it is not as if the market, it is a surprise for the market. I think we will take some time before this inflation cools off and markets become stable. Moving on to the oil market, the Brent crude prices today slipped marginally but remained within touching distance of a 3-month highs as fears of a new COVID-19 lockdown measures in Shanghai outweighed solid demand for fuels in the U.S. In intraday trade, Brent crude was trading at around $124.10 per barrel, while WTI crude prices were at $122.45 per barrel. Puneet, on Money Matters this afternoon, I asked you about what are the arbitrage tactics that the government of India is employing in procurement. Well, my next question is, what are the hedging tactics that they're using to bring down prices? Honestly, Arjun, I think the options before India are very limited. Until now, we were counting on discounted Russian crude. However, it makes up only 3 to 4% of India's oil imports. So Russian imported crude is not going to save India from high cost of oil. We will have to live with it. There are very few options, particularly with rupee also going down. I think we are going to face high oil prices at least for some time. चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 370 रुपए की गिरावट से 50,630 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। जुलाई अनुबंध वाली चांदी भी 990 रुपए की गिरावट से 60,390 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,836.10 प्रति आउंस पर था। चांदी भी मंदी दर्ज करते हुए $21.35 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली क्या कहेंगे आप, गोल्ड ईटीएफ के जो फिगर्स आए हैं मंथली इनफ्लोज के, उनमें अप्रैल में बढ़ा है इनफ्लो। क्या अभी गोल्ड को ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए, गोल्ड एज अ सेफ्टी, मैं कहूंगा सेफ हेवन की तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तेजी मुझे गोल्ड में फिलहाल नहीं लगती, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स जब तक नीचे नहीं आता, अगर वो 100 के नीचे आना शुरू होता है तब हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अंटिल डॉलर इंडेक्स नीचे आना शुरू नहीं होता तब तक गोल्ड विल नॉट बी अट्रैक्टिव। समय समाप्त हो गया है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। आप आए, कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत। धन्यवाद सोनू। And before we close, a reminder of the headlines. Industrial output in April increases 7.1% as against 1.9% in May this year. Domestic stock indices declined more than 1.5%. Sensex closes near the 54,300 mark. Nifty finishes near 16,200 level. And rupee depreciates to 77 rupees and 84 paise against the US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.